We have about a lot of verticals in which the skilling can take place. Right from the airport operations, you take ground handling, you take the ticketing. You have a big opportunity in MRO, in technical skilling. We have a biggest MRO here in Hyderabad, GMR MRO. And along with that, we have a GMR Aviation School, which is a 147 school, which is accredited to DGCA and EASA of Europe. We are offering 4 years course, in which 2 years are theory and 2 years are practical in MRO of GMR. So these are the initiatives and things, and the opportunities are abundant. We need to tap it. And if you see the type of requirement of jobs, it is around 50,000 jobs per year, which is going to accrue for all of us. We need to work together, and as industry where I am representing, I was in the Air Force for 40 years. I retired as an Air Marshal in the Indian Air Force under Ministry of Defense. I had a lot of opportunity to serve there. Now I want to give it back to the society here, to the industry and to the state government of Odisha. And it's very heartening for me to collaborate and also make a path-breaking, skilling initiative along with the state government of Odisha. Thank you very much. Thank you, sir. I think you have clearly mentioned, and I will again repeat to dear students, that there are huge opportunities in aviation and aerospace, and we will be partnering with the right kind of people, and will be facilitating that you can choose to be in aviation and aerospace. Thank you, sir. Now I will come to Manish ji. You are from technical background, SAP, President and Managing Director, SAP India. So we have a mix of, panel where people from different background, they tell about their sector. So initially, there are a lot of discussions that initially IT and ITES changed the jobs. But now even ITES is changing itself. So there are, because of AI and other technologies, so this landscape is also changing. So what will be your take on this? How students or institutions, they can prepare themselves to face these changes, or I will say disruptions? Manish ji. Sure, thank you so much. First of all, a big thank you. Absolute privilege and honor to be here. Sincere gratitude to the government of Odisha, government of India for such great initiatives. For me, I'm coming back to India after a decade or so, and things are so promising, right? Let me start from there. Very interesting question, but before I go there, I just wanted to let everybody know that when we go and attend global forums, and it comes to technology, we always talk about India as the oldest civilization with youngest population. And I can tell you that any change in technology that is happening is good for us as a country. And the reason why I say this is because inherently technology comes to us as a part of our culture. And the amount of changes that we have seen in terms of technology impacting the careers and the lives of communities and human beings have been pretty significant as such, right? So I think that's the starting point. Coming back to technology, let me give you, let's see the evolution of technology over the last 4 decades. The way we talk about Industry 4.0, in many ways we are in Technology 4.0, right? And if you ever think that the pace of change of technology is the fastest today, let me tell you that in future, this is the slowest that we have ever witnessed. So that's the precedence that we are talking about, right? Now coming back to your point about IT, ITS, look, at the end of the day, IT started as an enabler to business. We would go and automate a process, we will go and automate across industries, we will probably go and look at a procurement process, we'll go and look at a sourcing process, we'll go and to look at a recruitment process. Those processes were all automated by IT. Today we have got into a world where it is not only about automating a process, it is about accelerating the impact of that process to a business efficiency. And this is where the role of AI becomes extremely important. And I think as students, as communities, it is extremely important for us to realize that AI is here not to eliminate jobs, but it is here to supplement and create more efficiency. I was in a global forum about 3 weeks back, and somebody was telling me that if you look at 1940s, the roles that were available in 1940s, and the roles that are available today in any segment,
about 75% of new roles have got created. So while the ITS DNA has changed, what it is bringing in is that please start using technology in the context of business outcome, in the context of society and the impact that it can have in society, it can have in terms of impact to communities. And there are two areas that we absolutely need to understand. One, there is no business today that can probably sustain without the impact of IT. And then the second piece is our obsession about planet, right? I think the way we have to manage this, the carbon footprint and reduce the carbon footprint across the planet. In both the scenarios, every industry has to embrace technology in a big way. And my request to every student and every teacher out there is that please impart technology in a way that is relevant in the context of any business problem that we are trying to solve. And more importantly, please also understand that from business standpoint, from community standpoint, from government standpoint, while there are a lot of initiatives that will come in terms of skill development, I think self-learning is also an extremely important element here. Because the pace with which the technology is changing and the relevance of the technology becomes equally important. I can tell you that in a company like SAP, which has about close to 16,000 people in the country, globally we are about close to 100,000 professionals. A lot of focus is given in self-learning, right? In terms of your soft skills, in terms of using technology in the context of business outcomes. And I think that's the journey that people have to take in, right? So AI is going to be there. India is going to be at the forefront of this change. When 16% of the global AI piece which is coming in is coming from technology talent in India, when 96% of businesses in India are using technology and AI in the impact of their business, I think this is our opportunity, not only in terms of the current, what the country needs, but also taking it global. So that's the impact that we have. Thank you, Manishji, very comforting. So few things are very clear, that IT and AI is going to stay and improve our efficiency, and all businesses, and we have to train our students to solve the problems and in a way. And the most important message which goes out to students is that self-learning and keeping themselves updated is the only option, because at the pace where this technology is changing, there is no other option that you can go to the institute and upskill or reskill yourself. So and in that also, if I am right, then this IT and AI is helping, because so many courses are available online. They are relevant, and you can keep yourself relevant to the job market if you are doing that. Thank you, Manishji. So now, Mr. Sri Narhariji, Chief Operating Officer, Aditya Bidla Fashions and Retail Limited, from AI to fashion, retail and other sectors. Obviously, as IT has provided lot many job opportunities and many more opportunities to our youth, at different level, your sector is also providing lot many job opportunities. And so how do you think that your sector, the growth prospect of your sector in future in fashion, retail and apparel? Yeah. Thank you. Good morning, everyone. First of all, thanks for this opportunity. So I come from an industry which is very old, as old as agriculture. I'm sitting with people who are high technically, in the tech industry. However, both clothing and textile occupies a very important position today in our economy. We give employment to more than 40 to 50 million people even today. 2 to 3% of our India's GDP is coming from apparel and textile. And if you see the way India is growing, our consumption is going to be about $180 billion in the years to come. So as India is changing, as India is prospering, as we are becoming more urban, more women power, the children spending more, the middle class is burgeoning, there is a huge opportunity to invest and grow in this apparel sector. And if you look at globally, given the geopolitical issues, China +1 is giving us great opportunities. So apparel sector, even though
It is a old, very old sector. There is technology which people are embracing, both in supply chain, in design creation. In fact, in our company, Aditya Birla, all our creation is through AI now. So industry should know how to convert these AI ideas into reality. How do you translate into making a cloth, making a garment? So AI is everywhere, technology is everywhere, and India is changing. So for the students and the youngsters who want to be here, we need to embrace digital technology, the way we need to be agile. So after COVID, our industry has been affected like any other industry. We do not know where fashion is going to end. You know, the way people dress, the way people view clothing has become very different. People now are more fitness conscious than they were before COVID. So how can India, how can Indian industry respond to this change? That is one thing. Now, as in Odisha, I have to just tell you, we invested in Odisha about 6 years back. We started our apparel manufacturing unit. Today, I'm proud to say we employ 2,500 women workers in this plant, and we could shift orders from Bangladesh to Odisha, given the efficiency that we have generated in Odisha. So there are a lot of success stories. The Indian market is changing. There are global opportunities, but India has to go be very sharp in understanding the trends. So these are, and of course, Odisha. So there are a lot of success stories. The Indian market is changing. There are global opportunities, but India has to, as my co-panelists mentioned, the soft skill, the leadership skills, your networking skills, business acumen. So that is very, very important. And in apparel sector, we need to grow the middle management. The middle management skills are very, very important to dominate the world. Yeah, thank you very much. Thank you. I think you rightly mentioned that yours is one of the oldest industry, but with bright future. Thank you for assuring that. And also that deployment of AI technology in the very traditional old sector, it's something new, and our students and teachers must have taken note of it, that it's not only stitching, it's much more than that. It's AI, it's a fashion, it's changing, and it has, because of our own growing economy as well as global factors, there is, huge opportunities in this sector also. So now to Mr. Dheer, our bread and butter sector is steel and mines, and you represent Chief Executive Officer, Tata Steel Technical Services. So from that sector, as we know that earlier 1 million ton steel plant used to employ around 30,000 people. And now I think 5 million ton plant may be around 6 to 7,000. If I am correct, you can correct me if I am wrong. So, and our capacity as of now is around 30 million ton, especially in steel sector, and going to be 100 plus in next few years. So what will be your take on that? How is there any big change in the technology, job roles in the steel making or processing or downstream or ancillary? How should we prepare, or our institutions should prepare for that change, if any? Over to you. Thank you, sir, and good afternoon, everybody. One of the oldest in terms of the sector. If you talk about in terms of productivity, I think the benchmark would be close to about 1,500 employees per ton of crude steel made. So anywhere between 1,500 to 1,800 is where the world is, the best performers are kind of performing. And if I were to look at the advancement in terms of steel making, I think the buzzword is sustainability and green steel. There is nothing different
we already talk of green hydrogen a little while ago, but I think green steel manufacturing techniques, how to convert steel from, you know, renewable use of renewable energy, not using the traditional coal-based stuff. These are the advancements that are there in the steel sector. And I think from advice to the institutes and the students, I think it is important for us to keep tracking the statutory and the regulatory norms that are coming. Because one is about sustainability, the other is the regulatory norms being so fast changing and our adoption of a lot of them through the global sector. And I think the way we track them, monitor them and be agile enough, you know, to kind of invest in technology, invest in nurturing talent, invest in taking those steps which we align to the changing regulatory norms, I think is the key for steel sector going forward. Thank you. Thank you very much. I think there is paucity of time, so I will not go one by one. So I will just request esteemed panelists final words of wisdom that how we can improve our skilling ecosystem. So we can start with, yeah. Yeah, basically, if we want to collaborate, we need to improve, as all the panelists have told, on AI. AI is a very big thing, and if you see in aviation, it actually optimizes the flying routes, it optimizes the cost, it optimizes the fuel, it gets the carbon neutrality, which is a national aim, and also it teaches the skills to the students, and very important, and thereafter prepares them for a steady career in aviation and aerospace. If you see the youngsters who are coming to us, who are plane graduates, we teach them all the basic skills in airport operations, we teach them airport engineering, we teach them innovative skills, and also means of communication, how to communicate. It's very important for us. If you want to go big on the international stage, the youngsters need to communicate. They need to articulate what they know. The weak point is that today we need to improve that skill. So we are giving additional classes in the realm of the syllabus and curriculum to do the skilling in communication and also how to articulate. And then we need to ensure we need the simulators and other equipments which will save very, very important costs of actual operations. And it will also prepare the pilots, the aviators, the skilling personnel, the airport professionals and other people ready so that we don't spend much of time in actual training. In Air Force also, we lay a lot of emphasis on simulator training and also on AI models. So we need to stress on this in the future if we want to go really global. And I'm sure we are in the right frame, and the youth of Odisha should ensure all the opportunities are leveraged, what we all offer. And we are all set for you and all ready for you to take you to a different level. Thank you. Sure. Look, I'll probably speak in the context of technology. So 3 things that come into my mind. One, keep on trying new things, right? I think technology has a lot of power. If you look at the business models of Ola, Uber, Oyo, Make My Trip, I mean, pick up any of these business models. They are all asset light, but they all come through an idea, right? And it's always okay that in the digital world, as you're going in, every idea may not be successful, but keep trying, right? Failure is an option, right? Failure is an option in terms of trying new ideas, be entrepreneur, but make sure that whatever you do, you give your best there. And I can tell you there are so many ideas that are coming in, and the way the technology can be perceived and used will only require and give you the required benefits and dividends. So I think as long as you're taking technology as a learning curve and trying new things and not afraid to fail a few times till such time you succeed, I think that's the mantra of a new digital world that we are seeing within ourselves. So, as I mentioned, technology is playing a very important role even in an apparel sector. So, AI for creation, digital tools for creating an agile supply chain, understanding customers, so the data analytics, consumer behavior, their buying pattern,
their spending pattern. So you need to have a lot of data analytics skills to be successful in the retail market. Finally, how to be sustainable. How do you create sustainable products? Because world is becoming more and more responsible. Consumers are demanding brands to be responsible. There will be legislations which will force us to be responsible. So there is technology. How do you create materials without much of waste? How do you recycle? How do you upcycle? These are all the technologies which apparel industry definitely needs to capitalize on the opportunities that is available in front of us. Thank you. Yeah, I think I'd like to keep it a little more generic, and I think so much that is coming in. And on the stage, we represent different sectors, and we've given a different prescription to the state and what to do. But I think the one thing that I would recommend is remove the fear of the changing technology at the beginning, because I think when I learned driving from a driving training school, my instructor told me the one thing that you should be careful of: don't drive when you are afraid. So out of fear, don't drive. So I think that is one thing I like to recommend. Please remove the fear of the change that technology is bringing in. It has pluses and minuses. There's immense to learn. But I think the first is to remove the fear. The second advice to everybody is to be relevant. I learnt PLC or programmer logic in college without a PLC. I did my internship on a PLC that was obsolete. And when I joined industry, I had a different technology to work with. So there is what I learned in college was not applicable when I joined the job, because technology is changing so fast. Now it is even worse. In our days, it was still, I think, probably a decade or so, but now it is even faster. So the second thing I would like to advise is to remain relevant in whatever technology change is happening, whether it is in the area of sustainability, AI, robotics, smart technology, you name it and it is there, but be relevant. That is the second prescription that I want. Third advice to everybody is gone are the days of specialization. I think today you need areas where everything collaborates and you become that one whole. You need knowledge on environmental norms. You need knowledge on production or the technology that you're working on, maybe apparel, maybe aviation, maybe steel, maybe IT. You need communication. You need knowledge on teamwork. You need knowledge on working in teams and being agile, working in cross-functional teams. So I think that is the third thing I will prescribe is the days of specialization are far gone. I think you need to be a whole when you talk of personality development as an individual, to be able to cater to whatever life has to offer to you going forward. I think I'll keep it at that and wish everybody all the very best. So thank you all. I think it was pleasure to talk to you, and I think audience must have enjoyed and something they must have learned from you. We will keep engaging with all of you. Now I request Honorable Minister to felicitate our panelists. Kindly, sir. And an absolutely fantastic session comes to an end. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Minister of State, Skill Development and Technical Education and Industries, Shri Sampath Chandraswamy on the stage, requesting Sir to kindly felicitate all our panelists on the stage now. Ladies and gentlemen, our dear partners, participants and invitees, requesting all of you to please be with us. We just have a very small session followed by this, and then we shall be welcoming the Honorable Chief Minister of Odisha, requesting all of you to kindly be patient. Thank you.
Requesting all our panelists to kindly join in for a group photograph. Once again, ladies and gentlemen, we'd like to thank our moderator and our panelists for coming together for such a brilliant session, and thanking Honorable Minister for doing the honors of felicitating our panelists. Thank you so much. Requesting all of you to kindly take your seats off stage. And now, ladies and gentlemen, we shall take a minute for a quick session changeover. The next session will be Skilled in Odisha, Local to Global. जैसे आप मेरे बैटिंग और विकेट कीपिंग के फैन हो, वैसे ही मैं इंडिगो एक्रेलिक लैमिनेट के ड्यूअल परफॉर्मेंस का फैन हूं, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेसेस पे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत एक डाइवर्स लैंडस्केप होने के साथ ही वास्ट रिवर नेटवर्क से ब्लेस्ड है। ये रिवर्स पूरे देश की लाइफलाइन होने के साथ साथ देश के कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट को शेप देने का काम करती हैं। यूं तो इंडिया में 8 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, पर छोटी बड़ी मिलाकर यहाँ 400 से भी अधिक नदियां मौजूद हैं। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत में बहने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का लंबा सफर तय करती है, और इस सफर में ये देश के 5 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, उत्तराखंड में गंगोत्री और खाटलिंग ग्लेशियर बेस से 19 किलोमीटर दूर बसा है गौमुख नाम का स्थान, जहां से गंगा की पहली मेन अपस्ट्रीम यानी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है। दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसकी टोटल लेंथ 30 और विड्थ 2 किलोमीटर है। भागीरथी रिवर इसी गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में मौजूद गोमुख से अपना सफर शुरू करती है। भागीरथी की सेकंड ट्रिब्यूटरी केदार गंगा है, जो केदार ताल से निकलकर गंगोत्री धाम में भागीरथी में मिलती है। आगे बढ़ने पर भागीरथी में आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है जानवी रिवर।
इसे जात गंगा भी कहा जाता है। जात गंगा उत्तरकाशी में लोकेटेड तेचनोरा मल्ला से ओरिजिनेट होती है और ये भैरव घाटी नाम की जगह पर आकर भागीरथी में विलीन हो जाती है। उसके बाद झाला नाम की जगह पर सिया गंगा भागीरथी में आकर मिलती है। फिर डोडी ताल से निकलने वाली असी गंगा गंगोरी नाम की जगह पर भागीरथी रिवर में मर्ज हो जाती है। यहाँ से भागीरथी रिवर की विड्थ बढ़ने लगती है क्योंकि टिहरी डैम इसी पर बना हुआ है और टिहरी डैम रिजर्व में मौजूद पानी इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। यहाँ से आगे चलकर भागीरथी देवप्रयाग पहुंचती है, जिसके लिए गंगा की इस मेन अपस्ट्रीम को 205 किलोमीटर का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सफर तय करना पड़ता है। दोस्तों, गंगा की दूसरी मेन अपस्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। वैसे तो अलकनंदा की शुरुआत सतोपंत ग्लेशियर से होती है, लेकिन अपने शुरुआती सफर में ये नदी छोटे से रूप में पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अलकनंदा को बड़े और विशाल रूप प्रदान करने का काम दो अलग अलग नदियों के द्वारा किया जाता है। इन दोनों नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा का सफर नीति पास से, तो वहीं विष्णु गंगा का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग नाम के स्थान पर एक दूसरे में मिल जाती है और इनके कॉन्फ्लुएंस से अलकनंदा का रूप भी सूक्ष्म से विराट हो जाता है। विष्णुप्रयाग हमारे 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदा देवी सेंचुरी पर नंदा घुंटी के करीब मौजूद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली नंदाकिनी रिवर से मिलती है। जिस स्थान पर अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है, उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम है पिंडार। दोस्तों, पिंडार या जिसे पिंडार गंगा भी कहा जाता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस स्थान पर पिंडार का मिलन अलकनंदा से होता है, उसे करण प्रयाग कहा जाता है। करण प्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग है। इससे आगे चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। ये रिवर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, जो गंगा रिवर सिस्टम पर बनने वाला चौथा प्रयाग है। अपने आगे का सफर जारी रखते हुए अलकनंदा गढ़वाल डिवीजन के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से करीब 195 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देवप्रयाग नाम के स्थान पर पहुंचती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इन दोनों नदियों के संगम से जिस नदी धारा की उत्पत्ति होती है, उसे ही गंगा नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा नाम की उत्पत्ति वाला ये देवप्रयाग 5 प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग है। दोस्तों, दरअसल प्रयाग का लिटरल मीनिंग कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ रिवर्स होता है, यानी ऐसा स्थान जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आपस में मिल रही हों। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग इस इलाके में मौजूद वो 5 प्रयाग हैं जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। दोस्तों, देवप्रयाग से ये नदी गंगा के रूप में अपना सफर शुरू करती है, जहां गंगा टिहरी और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लाइन बनाते हुए आगे बढ़ती है। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नयार नदी गंगा में आकर मिलती है। नयार गंगा की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है और ये फूल चट्टी नाम की जगह पर गंगा से मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बनाली कश्माली धार से ओरिजिनेट होने वाली चंद्रभागा रिवर ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा रिवर में मिलती है। वैसे तो चंद्रभागा गंगा की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, जिस वजह से इस नदी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन पिछले साल सोशल प्रैक्टिसेस के चलते इस रिवर का एक गार्बेज डंपिंग जोन बन जाने की वजह से ये रिवर काफी चर्चा में रही थी। यही दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रभागा नाम की एक दूसरी प्रमुख नदी महाराष्ट्र में भी बहती है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी चंद्रभागा से अलग है। बहरहाल आगे चलते हुए गंगा टिहरी धनौल्टी के पास सुरकंद माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाली सोंग नदी से ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच मिलती है। सोंग रिवर को देहरादून की मिराकुलस रिवर कहा जाता है। दरअसल इस रिवर में मिनरल्स का हाई कंटेंट मौजूद है, जो आसपास के सॉइल को फर्टाइल बनाने के साथ साथ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद गंगा रिवर हरिद्वार में हर की पौड़ी में पहुंचती है। हर की पौड़ी वो जगह है जहां से रिवर गंगा माउंटेनियस रीजन से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है। हर की पौड़ी के पास एक बैराज बना हुआ है, जिसे भीमगोड़ा बैराज कहते हैं। यहाँ गंगा से एक कैनाल निकाली गई है, जिसका नाम अपर गंगा कैनाल है, जो रुड़की से होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। वहीं इसी जगह से गंगा का फ्लो साउथ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा भारत का हृदय स्थल कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एंटर करती है
बिजनौर में भी गंगा रिवर पर एक बैराज बना है जहां से मध्य गंगा कैनाल निकलता है। यहाँ से गंगा आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के नरौरा में प्रवेश करती है। ये वही जगह है जहां से लोअर गंगा कैनाल निकलता है। मुजफ्फरनगर के बाद गंगा फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुंचती है, जहां नैनीताल से ओरिजिनेट होने वाली रामगंगा रिवर गंगा में आकर मिलती है। रामगंगा गंगा की एक फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कन्नौज से आगे बढ़ती हुई गंगा कानपुर और फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज वह स्थान है जहां उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली यमुना नदी गंगा से मिलती है। यमुना गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं ये गंगा की एकमात्र हिमालयन ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक में ज्वाइन करती है। प्रयागराज से आगे रिवर गंगा मिर्जापुर और वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ कैथी नाम की जगह पर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर लेक से ओरिजिनेट होने वाली गोमती रिवर गंगा में आकर मिलती है। गोमती रिवर रामगंगा की ही तरह गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गाजीपुर से आगे बलिया होते हुए गंगा बिहार में एंटर कर जाती है। इस तरह रिवर गंगा उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अपने बिहार के सफर में जब गंगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है तो सबसे पहले उसे कैमूर रेंजेस से ओरिजिनेट होने वाली कर्मनाशा रिवर का साथ मिलता है। कर्मनाशा यमुना की ही तरह गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बक्सर से आगे गंगा भोजपुर होते हुए सारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है, जहां तिब्बतन प्लेटू के मापचाशुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली घाघरा रिवर गंगा रिवर में आकर विलीन हो जाती है। घाघरा गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से आगे गंगा बिहार के कैपिटल पटना में प्रवेश करती है, जहां झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होने वाली पुनपुन रिवर गंगा में आकर मिलती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पटना में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होकर आने वाली सोन रिवर भी गंगा में ज्वाइन होती है। सोन भी पुनपुन की ही तरह गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बिहार में गंगा रिवर की मैक्सिमम लेंथ पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। दूसरी तरफ पटना के ऑपोजिट साइड में सिचुएटेड सोनपुर में नेपाल के हाई हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होकर आने वाली गंडकी नदी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, गंगा में मिलती है। गंडकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो हाजीपुर के करीब गंगा में मिल जाती है। अपने आगे का सफर तय करते हुए गंगा वैशाली, समस्तीपुर के रास्ते कटिहार पहुंचती है। कटिहार में नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली कोसी रिवर का संगम गंगा से हो जाता है। कोसी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरह गंगा बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 445 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड में एंटर करती है। लेकिन झारखंड में गंगा का सफर बहुत छोटा होता है। दरअसल गंगा झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज में एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल की ओर चली जाती है। वेस्ट बंगाल में एंटर होते हुए गंगा मालदा डिस्ट्रिक्ट होते हुए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, जहां से इस रिवर का डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न साइड में चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गंगा पर फरक्का डैम बना हुआ है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धुलियान नाम की जगह के नॉर्थ में गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंट जाती है। इनमें एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसे पद्मा रिवर कहते हैं। वहीं इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी को हुगली का नाम दिया जाता है। हुगली सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और यहाँ से गंगा के इस रिवर सिस्टम को हुगली वेस्ट बंगाल की मेजर रिवर है, जिसके किनारे मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कोलकाता, डायमंड हार्बर और हल्दिया जैसे इलाके मौजूद हैं। हुगली रिवर की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, दामोदर रिवर और रूपनारायण रिवर। वहीं अपने लंबे सफर के अंत में गंगा सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, गंगा की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से एक पद्मा बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में पद्मा रिवर के साथ ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है, जो हिमालय के तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम के सहारे बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर अरीछा नाम के स्थान पर पद्मा रिवर को ज्वाइन करती है। जमुना से मिलने के बाद पद्मा आगे बढ़ते हुए एक और रिवर को ज्वाइन करती है, जिसे मेघना कहा जाता है। ये रिवर बराक नाम से इंडिया के मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होती है और असम के लाखीपुर के पास प्लेन्स में एंटर करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। मेघना और पद्मा का मिलन बांग्लादेश के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के करीब होता है और यहाँ से गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी यानी पद्मा का नाम भी मेघना ही हो जाता है। जमुना यानी हमारी ब्रह्मपुत्र
पद्मा यानी हमारी गंगा और मेघना मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो आज दुनिया का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए मेघना रिवर आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और इस तरह से पूरा होता है गंगा रिवर का उत्तराखंड से शुरू हुआ सफर। दोस्तों, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक यानी माउंट एवरेस्ट को अपनी गोद में समेटे बैठा हिमालय एशिया की ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेन्स को तिब्बतन प्लेट्यू से सेपरेट करने वाली ये माउंटेन रेंज एशिया में बहने वाली कई रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। इन माउंटेन रेंजेस में ओरिजिनेट होने वाली नदियों में से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे प्रमुख नदियां हैं। तो यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये रिवर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी जल का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। यानी ये नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो एशिया के अलग अलग देशों से होकर बहती है। इन देशों में तिब्बत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। तिब्बत से लेकर बांग्लादेश के बीच फ्लो करने वाली ब्रह्मपुत्र का दायरा काफी बड़ा है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। इन सब के अलावा इस विशाल नदी के शोर्स ने अपने जीवन काल में कई सिविलाइजेशंस और कल्चर्स के मिलन को भी विटनेस किया है, जिनमें आर्य अनार्य, मंगोल तिब्बतन, बर्मीज द्रविडियन और मुगल अहोम कल्चर्स का कोलिजन सबसे अहम है। तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होने वाली ये नदी अपने ओवरऑल कोर्स के दौरान अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिनमें सांगपो और जमुना जैसे नाम सबसे विख्यात हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ब्रह्मपुत्र रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट होती है और इसका एंड कहां होता है, किन किन कंट्रीज से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट डायरेक्शन क्या है। साथ ही हम ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, जो तिब्बत, चाइना, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। हालांकि भूटान में से ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम का प्रवाह नहीं होता, बल्कि यहाँ से बस कुछ छोटी सहायक नदियों का उद्गम मात्र होता है। एवरेज डिस्चार्ज के नजरिए से ये रिवर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और लेंथ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 15th लार्जेस्ट रिवर है। यदि हम इस रिवर के ओरिजिन की बात करें तो 19th सेंचुरी से पहले इस रिवर का ओरिजिन दुनिया के लिए एक मिस्ट्री की तरह था, लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ यूरोपियंस ने इसके ओरिजिन पॉइंट के बारे में पता लगाया, जिसके बाद से 3 ग्लेशियर्स को ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। इन ग्लेशियर में सबसे पहला नाम है कूबी ग्लेशियर, जिसे वाटर डिस्चार्ज के आधार पर इसका सोर्स माना जाता है। दूसरा नाम है चेमायुंगनुंग का, जिसे टर्म्स ऑफ लेंथ के बेसिस पर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। वहीं आखिरी नाम है अंगसी ग्लेशियर, जिसे सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ये मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि मानसरोवर लेक के पास मौजूद है। मानसरोवर लेक को तिब्बत में मपांग युत्सो के नाम से भी जाना जाता है और ये फेमस माउंट कैलाश से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर मौजूद है। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र इंडिया में असम वैली के थ्रू और इस दौरान इलाके की बहुत सी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिल जाती हैं। इनमें से कुछ फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिहिंग, धनसिरी और कलंग। वहीं मानस, कामिंग, संकोश और सुभानसिरी इसकी फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंसीडर की जाती हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज इसके राइट बैंक साइड से इसे ज्वाइन करती हैं, क्योंकि ये सभी ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होकर आती हैं। साउथ वेस्ट तिब्बत से ओरिजिनेट होने वाली रिवर ब्रह्मपुत्र की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है। वहीं इसकी एवरेज डेप्थ 38 मीटर्स और एटमोस्ट डेप्थ 120 मीटर्स है। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है, यानी ये एक लट वाली नदी है, जहां ये विशाल नदी एक मोटी धारा ना होकर बिखरी हुई है और आपस में गुंडी हुई धारा के रूप में आगे बढ़ती है। यही वजह है कि ये नदी अपने सफर के दरमियान कई छोटे बड़े रिवर आइलैंड को बनाती हुई फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में डायडेंस और ओइडेंस जैसे नामों से पुकारा गया है। वहीं एंशिएंट संस्कृत में इसे लोहित नाम की एक नदी का जिक्र किया गया है, जो त्रेता और द्वापर युग के दौरान भारत के सबसे पूरब में बहती थी। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लोहित और कोई नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर का ही एंशिएंट नाम था। आज असम में रहने वाले लार्जेस्ट एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप बोडो इसे भुल्लम बुथुर कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है मेकिंग अ गर्गलिंग साउंड। दरअसल ब्रह्मपुत्र रिवर असम के आसपास के इलाकों से निकलते वक्त गर्गलिंग साउंड यानी गुड़गुड़ाहट की आवाज पैदा करते हुए आगे बढ़ती है। इस वजह से बोडो ट्राइब इसे भुल्लम बुथुर बुलाती हैं। इस सब के अलावा मौजूदा वक्त में ब्रह्मपुत्र को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन चलिए अब इस रिवर के
कोर्स को फेज्ड मैनर में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मपुत्र साउथ वेस्ट तिब्बत के नदन हिमालयाज में सिचुएटेड माउंट कैलाश के पास मौजूद मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट होती हैं। इसके बाद ये रिवर 4000 मीटर की एवरेज हाइट पर करीब 1700 किलोमीटर तक ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वही कारण है कि इस रिवर को वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अपने अपर कोर्स में ब्रह्मपुत्र को जनरली सांगपो, जिसका अर्थ प्योरीफायर है, के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका चाइनीज नेम यारलंग जांगबो भी है। हिमालयन रेंजेस की पैरेलल चलते हुए अपने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर ब्रह्मपुत्र रिवर माउंटेन नामचा बरवा के पास साउथ डायरेक्शन में मुड़ते हुए एक जॉर्ज का निर्माण करती है। इसी दौरान ये यारलंग सांगपो केनियन यानी एक घाटी का निर्माण करती है, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट केनियन है। इससे आगे बढ़ते हुए रिवर ब्रह्मपुत्र इंडिया के नदन अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दोस्तों, इंडिया में ब्रह्मपुत्र की जर्नी अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और ये अरुणाचल में जैसे ही एंटर करती है सियांग रिवर के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल का माउंटेन रीजन के बाद ये प्लेन्स में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और प्लेन्स में इसका नाम दिहांग रिवर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करीब 230 किलोमीटर फ्लो करती है और पासीघाट पहुंचती है। पासीघाट से करीब 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्लो करती हुई साउथवर्ड डायरेक्शन में असम वैली में एंटर करती है। असम वैली के कुछ रीजन में इसे लुइत रिवर भी कहा जाता है। असम वैली रीजन में दो मेजर रिवर्स दिबांग और लोहित आकर इसमें ज्वाइन होती हैं। दिबांग रिवर इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से और लोहित ईस्टर्न तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होकर आती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के सादिया टाउन के पास ज्वाइन होती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों रिवर्स आपस में ज्वाइन होती हैं। इस कन्वर्जेंस पॉइंट से रिवर काफी वाइड हो जाती है और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि लोहित रिवर पर ही भूपेन हजारिका सेतु बना है, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। आगे चलकर इसमें एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, जिसे दिहिंग रिवर या बूढ़ी दिहिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होकर आती है। ये रिवर डिब्रूगढ़ के पास दिहिंग मुख नाम के स्थान पर ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच बोगीबील ब्रिज बना हुआ है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट